world largest Amazon campus. We have to prepare about these principles that you people can see here. सब यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं. How to clear the interviews. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bengali Kanya living in Hyderabad. And today I'm going to show you how it actually feels working in world largest Amazon campus in Hyderabad. This is our reception area. We have to take ID cards for visitors. So जब भी हम कोई friends और family को लेके आते हैं, we have to register themselves here. You people can see low rise and high rise lift lobby. ऐसा क्यों? So low rise is accessible to ground to 9th and the high rise is for 10th to 15th floor. So in height 13, roughly 15,000 employees are working here. During peak work hours time, इतने employees हो जाते हैं, इतने भीड़ हो जाता है, इसीलिए they have separated these two lift lobbies. सो दिस इज़ कैफेटेरिया. यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स मिल जाते हैं, वेज नॉन वेज का एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. मतलब चाय के लिए जैसे नॉर्मल बाकी ऑफिस में भी हमें मिलता है. सो आई एम गोइंग टू शो यू कि यहाँ पे कितने सारे काउंटर्स हैं और यहाँ पे क्या क्या मिलता है. सो ऑलरेडी आई हैड माई लंच हियर दैट आई शोड यू. हमने यहाँ से कैलिफोर्निया बरीटो से वी टुक वन राइस बोल, रेगुलर राइस बोल एंड वन बरीटो. तो वी कैन कस्टमाइज़ कि हमें क्या चाहिए उसमें, वेज या नॉन वेज में, उसके ऊपर भी हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू शो यू कि यहाँ पे कैफेटेरिया कैसा दिखता है. This is our drop plate area. The best part is this greenery. Actually, it is based on Amazon forest theme. So किसी को ये बाहर देखने से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑफिस है या कोई पार्क में हम लोग आए हैं. So it's wonderful because there are lots of plant species they have planted here. I'm going to show you. चलो.
आई रियली लव दिस प्लेस। जब भी काम से थोड़ा सा टाइम मिलता है या जब भी हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं काम के प्रेशर में, तब हम लोग यहाँ पे आ जाके बैठ जाते हैं। शाम को मैं और अपने फ्रेंड्स, मतलब मेरे कलीग्स जो हैं, सब यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं। So total we have 15 floor in this building, and currently I'm at first floor, that is the recreation floor. So दिखाती हूँ आप लोगों को कि recreation floor पे क्या क्या है हमारा। Now I am going to show you our balcony. Yes, you heard it correct. Balcony. So यहाँ पे बहुत कम access मिलता है. Come on, let me show you. So we have two towers, North and South Tower. Currently I'm on 14th floor of South Tower, जो मेरा workplace है, and I'm going to show you my workstation also. So we can see two arrows are given here. So basically, हर एक tower में, as I told you that we have two towers, South and North Tower. So each tower पे we have two bays. This is one bay that we can see. Another one is there. तो वहाँ पे और एक bay है. So I'm going to show you where my team sits. So today is Saturday. That's why I planned to shoot this video today, क्योंकि आज खाली रहेगा and workplace पे भी ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे. So this is the place where my team sits, and you can see that I have kept my bag over there. So that is my desk. So yes, this is where FEOPS, where I'm currently working, the team seats here. We have 30 kitchenettes, 2 on each floor, और हर एक kitchenette में एक vending machine, water dispenser and coffee and chai point है. तो कुछ भी अगर काम करने के बीच में खाने का मन करे, there is no need to go down to the cafeteria. We can easily grab it from here. Deep dive, frugality, customer obsession. Now what are these? I hope that you people can see the posters behind me. These are the leadership principles of Amazon. Now, why I'm talking about all of these things? Basically, अगर किसी को भी अप्लाई करना है Amazon में, चाहे वो कोई एक्सटर्नल कैंडिडेट हो या इंटरनल एम्प्लॉय जो अपने करंट पोस्ट चेंज करना चाहता है टू मूव टू अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, we have to prepare about these principles that you people can see here. So if you people want to know about all of these things and how we can prepare ourselves for the interviews, comment down below. I hope that you people liked my video. जितना possible हुआ, I tried to capture inside of world's largest campus of Amazon. So if you people want to know how to clear the interviews, and if you want to know कि Amazon के different teams कैसे काम करते हैं, please subscribe and comment down below. And if you people want to check my daily life in Amazon, you people can also check my Instagram channel. I will give the Instagram handle below. Thank you. Bye-bye.